newer forms of content, what is happening is people are pushing the creative boundary. वही होता है, like how do you convey a blog in 30 seconds, मतलब कैसे करोगे, मतलब क्या बोलोगे. जैसे मान लो किसी का इंटरव्यू है और आपको एक टीजर बनाना है, उसको रील में कैसे कन्वर्ट करोगे. सो इट रियली फोर्सेस यू to think in 30 seconds, infographic, blog, social media post, ये वो मैं कैसे मतलब एक piece of content को 10 बारी मैं मतलब split करूं. And that is the biggest challenge of content and content writing and content marketing today. Hello and welcome to Beyond GraffersID, where we talk about the real hustle of an entrepreneur. I am Aditi Munna Jain, the Chief Marketing Officer at GraffersID, we're a website and software development company. Today we have Vanshika Mehta, who is a brand strategist, a storyteller, and communications consultant. LinkedIn Top Voice 2021, a marketer graduate from Northeastern University in Boston. She has worked with various companies in tech, edtech, fintech, and various other SaaS industries. She quit her 9 to 5 job and began her freelancing journey in the year 2020. She now helps small businesses and startups to communicate clearly and crisply. And even since she has worked on more than 70 projects and gathered around 1 lakh LinkedIn followers. So, welcome Vanshika to the show. Thank you so much. That was such a lovely introduction. Thank you so much. Thank you so much, Vanshika. So, shall we start? Yeah, go for it. I'm excited to see So what you we'll be want to ask talking me. about content writing and branding and storytelling, all these things in the show. So the very first question I want to ask is, what is branding? The term branding, because people use it in various often terms. They use it for logo designing or identity designing, even sometimes typography. Maybe we need to set the record straight. So you're the best person to tell me what is branding. So please tell me, what is branding actually exactly, and how do you define it? Yeah, that's an amazing question to begin with. So here's the biggest problem, and I think you also defined it very well, is that people correlate branding to the things that they see. Like you see a logo, you see a color, you see a font, but that is all derived from something much larger, right? So all of these chota deliverables, what we see and what we recognize as brands, and we correlate it to branding, is the end product of maybe years and years of work done behind it. So if I had to summarize and tell you what is branding in one line, branding is basically consumers' mind space. That's what it is. It is that part of the consumer's brain that you are capturing as a brand. Now, how you do it is the logo, the font, your social media, your website, blah, 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 blah. But at the end of the day, everything branding boils down to how much mind space are you getting and what is the attention span that you are taking out of somebody's day to pay attention to your brand, right? Because at the end of the day, branding is very correlational to everything that you do, right? If you put an ad in a newspaper, that is a branding activity, right? If you do your social media, that is marketing plus branding, obviously. But all of these little things, right, you're asking consumers who are really busy. I mean, we have only n number of hours per day where we actually are on our phones or laptops or are actively consuming content. Out of that, you're asking a consumer, okay, hey, pay attention to me. And that is what branding is basically, not everything else that you see. Because everything else that you see comes from a huge strategy of like, this is what we want our brand to be. And when consumers think of us, they should think of us as X. Like, you'll never correlate Adidas to a food brand. You'll never correlate, say, Sephora into a shoe brand, right? They've built that mind space that that brand is equal to this product, and the product does this for you. Everything else that you see and feel and experience is all part of the branding activity. So if I had to explain it in short, that would be the best way to explain it. Wow, wonderful. It was so clear and crisp, as said in the introduction. Okay, so I am from the IT sector. We are from website and software development. So, making a brand in such a sector and basically from B2B business is a very difficult, I guess, because there's huge competition. So, what are your suggestions on how to get started in building a brand,
specifically for a B2B sector? Yeah. So the thing is, a lot of people think that branding works differently in B2B and B2C. But the reality is, whether you're in B2B or B2C, you're still talking to humans, right? B2B might just be that you're selling to a human through something, right? Or B2C is direct to consumer, right? So the end person that's receiving or seeing or engaging with your branding is the same. The only difference is, I think, in B2B, right? It's very competitive. By now in 2022, there are like n number of competitors for every single product category you can think of. So what really sets you apart, and I was explaining this to my client recently who's building a SaaS tool, is that you have to move from functional benefit to the emotional benefit, right? And that is where you really can capture the audience's mind space, specifically in B2B, right? So for example, like we were talking about, say, say for example, this thing saves you time. That is just a functional benefit. But what is the emotional benefit? What is bigger than saving time? More than saving time, you can grow your business, you can multitask, you can do different things, you can automate. These are the benefits that you have to tell your consumer. Because in B2B and B2C, the way you communicate is very different, but the logic or the frameworks that you use for branding stay the same. There's no separate framework that if you're in B2B use this, if you're in B2C use that. It's all the same. It's just a little bit in difference in terms of communicating, because B2B is a very competitive space. So I would think, like, if you're in the IT segment, right, just by saying, hey, we provide you IT web development services, that's not enough. Instead, you have to say something like, save your team's bandwidth, and allow your team to explore business opportunities, or do something else and give us this responsibility, and you can trust us by doing this. So that is the functional benefit, right? That you have extra hands on deck, you have 24/7 remote support, you have all of these things, right? These are the things that will matter to them, not the fact that you're doing the web dev for them. What will matter to them is what are they getting on the other end. So I mean, the rules of the game are pretty much the same. There's no real big difference, to be honest. Wow, that was wonderful actually, because we have to say the same thing in a different way, maybe. Yeah. You have to Yeah. highlight your core points and what your specialities, basically, what you want to say here is. All Right. Yes. okay. So, Vanchika, people really get confused mixing branding with marketing. So, how do you differentiate exactly branding with marketing? What is branding exactly, and what is marketing in a space? Yeah, that's also a very good question, because a lot of people mix it up. And the reason that they mix it up, and this is what I have realized, is because जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, branding was never like, कोई पढ़ा नहीं जा रहा था. There was no section on branding. It was all marketing का class, ये लो marketing का class, वो लो. But अगर colleges, if they could restructure their thing and separate what is branding, what is marketing, and focus on both, I think students would get a much wider exposure compared to just learning about marketing. But to answer your question, it's like like a parent and child relationship. So behind every marketing activity, उसके पीछे there is something which is like, हमें ये वाला brand बनाना है, ये वाला mind space capture करना है. Now branding will tell you that you want to be known for the best athletic shoes for people जिसको भागना है, जिनको fitness में घुसना है, जिनको yoga करना है, whatever that mind space is, that will be defined by the branding aspect. The marketing aspect will tell you कि यार 10 social media post कर दो, 3 email भेज दो, ये कर दो, वो कर दो. So it's much more tactical in the way that it happens. And marketing में जो होता है, उनका strategy keeps changing because the market keeps changing, right? Versus branding में ना जो होता है, you don't go back and change your brand strategy every 3 months, because 3 months is not enough time for your consumers to even understand or fully grasp what you're doing. So brand strategy जो होता है, वो maybe साल में एक बार होता है, या maybe you might have two mini strategies during the year कि ये try करते हैं, फिर ये try करते हैं. But overall the bigger picture is always branding. The mini part of it is execution के social media करना है, ये event को sponsor करना है, इसको ये देना है, वो देना है, whatever you need to do, that is all marketing tactical stuff. So that is the major difference. And also, a lot of people
do marketing related stuff without doing the branding stuff. और जो मैं उनको कहती हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती है, because if you get caught up in the tactical aspect, जैसे आप बोलो 10 सोशल मीडिया पोस्ट करना है, 5 ईमेल्स करना है, ये करना है, वो सब is all just like the moving the engine, but what is the bigger picture? मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हो अपने कंज्यूमर को? मतलब ब्रांड, ओके थिंक ऑफ इट दिस वे सिंपली, ब्रांडिंग जैसे होता है ना, इट्स अ जीपीएस इन योर कार। जैसे जीपीएस बोलता है ना, यहाँ से सीधा लो, यहाँ से राइट लो, यहाँ से लेफ्ट लो, ब्रांडिंग वो जीपीएस है, आप ड्राइवर हो गाड़ी में, जो ड्राइव कर रहे हो वो मार्केटिंग है। बस ऐसे ही समझो, मतलब सिंपली पुट दैट इज व्हाट इट इज। All right. So can you please explain this with a real life example of a brand itself taking some? Yes, so for example, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक D2C ब्रांड, जैसे ब्यूटी ब्रांड्स बहुत हो रहे हैं अभी इंडिया में, राइट? तो दोज काइंड ऑफ ब्रांड, जैसे इवन इफ यू टेक शुगर कॉस्मेटिक्स फॉर एग्जांपल, राइट, उनका ब्रांड स्ट्रैटेजी है मिलेनियल वुमेन हु वांट देयर मेकअप टू लास्ट, मतलब 12 घंटे 18 घंटे, और उनका जो मेकअप उतना है फ्लॉलेस होना चाहिए। एंड उन लोगों का ब्रांड स्ट्रैटेजी अगर आप देखो, इट्स ऑल अबाउट नॉट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बट एजुकेटिंग। मतलब उनका सारा मतलब जो थ्योरी है, जो जो करते हैं कि लाइक हमें मेकअप को फन बनाना है, हमको मेकअप को मतलब वी डोंट वांट इट टू बी like a thing which is like you're forced to put makeup, but you should enjoy putting makeup. And उनका जो ब्रांडिंग एस्पेक्ट है, जैसे आप उनका पैकेजिंग देखो, आप उनके प्रोडक्ट नाम देखो, जैसे आप उनका सोशल मीडिया देखो, राइट, it's all a very fun peppy vibe के let's give millennial women affordable makeup that can last for hours। जैसे मतलब I तो love sugar cosmetics, मेरे सारे लिपस्टिक शुगर कॉस्मेटिक्स के ही हैं और वो बिल्कुल हटते नहीं है। And like most other people must have discovered this brand, it came to me on social media through an ad। मैंने बोला चल ट्राई करते हैं, देखते हैं, फिर एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, भी पता नहीं कि 10-15 लिपस्टिक्स है मेरे पास। So the brand story that they're building is कि millennial women want makeup that lasts long and looks good and is high quality, that is the brand strategy। उसके नीचे जो है कि ये लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं कि फाउंडेशन कैसे लगाना है, उनके ईमेलर्स में आता है कि ये वाला ऑफर चल रहा है, जैसे उनका ऐप है तो दे टॉकिंग अबाउट ये प्रोडक्ट अभी सही है, ये नहीं है, so all of these little things are execution, but the bigger picture is what they are working towards। और वो bigger picture को chase करना is the marketing's responsibility। brand strategy will tell you कि चलो जैसे मान लो जैसे लॉरेल है, रेवलॉन है, ये है वो है, सारे ब्रांड्स हैं, हर एक ब्रांड का एक अलग पोजिशनिंग होता है कि हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे ये वाले टारगेट ग्रुप को क्योंकि इनको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो ब्रांडिंग विल टेल यू कि ये हमारे सारे 10 कंपेटिटर्स हैं, यहाँ पे हमारा स्पेस है वे वी कैन कम्पीट। ब्रांडिंग विल टेल यू कि आपको इस जगह को कैप्चर करना है। अभी आप कैसे करो, कितने ईमेल्स करो, सोशल मीडिया, जो भी आपको करना है वो अलग बात है। आपका पैकेजिंग कैसे दिखता है, मतलब अगर आप शुगर का पैकेजिंग भी देख लो, उनका पैकेजिंग बहुत अलग है। जैसे आप दूसरे ब्रांड्स को देखो, लिपस्टिक्स, आईलाइनर्स, प्लेन पैकेजिंग में होता है, काफी काफी मतलब बोरिंग टाइप का, पर उनका काफी कूल है, मतलब वो 3D टाइप का इमेज होता है उस पे, और उनका जो टेक्स्ट फॉन्ट है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग एक्टिविटी। एंड marketing is basically everything else that they do, so that is I think a fairly good example। Wonderfully explained. All right. So Thank you। I don't have anything to add on. You have explained so well. All right. Thank you। So coming again, so coming to storytelling now. What is storytelling and how to incorporate storytelling in content writing? So storytelling is basically, if you had to summarize it in मतलब easy करने के लिए, if I had to explain it to you, it's a chain of thoughts जो इंसान पढ़े या सुने या बात करे, मतलब it makes sense, that is a story। Like the connection bit is where the story happens। content कोई भी लिख सकता है, but storytelling काफी मुश्किल है, because you have to really put yourself in your consumer shoes। you have to understand कि उनको क्या चाहिए, you have to understand कि वो लोग कौन सा लैंग्वेज समझते हैं, कैसे समझते हैं, और मतलब उनको मतलब क्या बोलना है तो इज द हार्डेस्ट पार्ट, बट हाउ डू यू से इट, दैट इज व्हाट स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट। कि उनके कौन से इमोशंस को
टच करना है, कैसे बात करनी है. तो दैट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. एंड द रीजन इट इज सो इम्पोर्टेंट इज बिकॉज अगर आप मेरे को कुछ ए फैक्ट बताओ, फिर तुम सी फैक्ट बताओ, फिर तुम एच फैक्ट बताओ, मेरा दिमाग में कनेक्ट नहीं होगा. मतलब मैं समझूंगी इंडिविजुअली कि ये 3 चीजें आपने मेरे को बताया है. जैसे आप मेरे को बताओ, एक गाड़ी है, उसका ब्लू कलर है, और इनका से हरियाणा में गाड़ी खरीदी है. अब मैं फैक्ट्स का क्या करूं? मतलब मेरे को समझ आ गया कि आपने ये बोला, ये कोई स्टोरी है. बट अगर आप मेरे को, हाँ, लाइक यू कांट कनेक्ट द डॉट्स, राइट? अगर आप मेरे को बोलो कि एक दिन हम चले गए थे चंडीगढ़ से ड्राइव पे, हमने एक नई गाड़ी लेनी थी, हम इधर गए, हमने ये गाड़ी चुनी, हमने उसको बोला कि ये कलर ब्लू में करो, इसको ये करो, तो फिर वो सारा मतलब वो कनेक्ट हो जाता है ना स्टोरी. सो दैट इज बेसिकली व्हाट स्टोरी टेलिंग इज. और कंटेंट राइटिंग में अगर आप ये ला नहीं पाते हो अपने कंटेंट में, तो उन वो मतलब वो स्टोरी बनता नहीं है. एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन कंटेंट रिटन फॉर ह्यूमंस एंड कंटेंट रिटन फॉर गूगल. गूगल तो विल रीड कीवर्ड्स, उनको पता है कि ये कीवर्ड उठाना है, ये कीवर्ड उठाना है, ये वाला. पर अगर आप ब्लॉग्स और सोशल मीडिया, मतलब ब्लॉग्स मेनली, सॉरी, अगर आप ब्लॉग्स ह्यूमंस के लिए लिख रहे हो, तो फिर आपको स्टोरी टेलिंग इट्स नॉन नेगोशिएबल, आपको करना ही पड़ेगा. बिकॉज इफ यू आर राइटिंग फॉर गूगल, तो गूगल विल जस्ट बी लाइक कीवर्ड 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 कीवर्ड, चलो इस ब्लॉग को इधर रैंक करो. पर अगर आप ह्यूमंस के लिए लिख रहे हो, ह्यूमंस ऐसे तो पढ़ते नहीं है ना. अगर आप पहले मतलब 10 सेकंड में एक ह्यूमन का मतलब जैसे मैं एक ब्लॉग पढूं, 10 सेकंड से ज्यादा अगर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं छोड़ दूंगी. आपने क्या 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखा या 4000 का, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा. वो पहले 10 सेकंड में अगर मैं पढ़ूंगी नहीं, मतलब मेरे को पहले 10 सेकंड में मजा नहीं आया, तो मैं आगे पढ़ूंगी नहीं. And that is where the creativity comes in, and this is all across the board, B2B and B2C. And for any industry that you're in, because humans are going to read that blog, right? That is the biggest difference in the ways companies think, right? अगर आपको blog Google के लिए बनाना है, तो keyword डालो and बस मतलब जनरल, मतलब एवरेज से थोड़ा सा अबव राइटिंग करोगे, चलेगा. बट अगर आप ह्यूमंस के लिए लिख रहे हो, जहाँ पे आपको थॉट लीडर बनना है, जहाँ पे आपको अथॉरिटी बनना है अपने नीश में, देन यू हैव टू हैव दैट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, बिकॉज अदरवाइज वो कोई पढ़ेगा ही नहीं. तो आपका ही लॉस. आप इतने पैसे कोई कंटेंट राइटर को दे रहे हो ब्लॉग्स लिखने के लिए, और अगर वो पढ़ेंगे नहीं, तो क्या फायदा? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट्स लाइक द हार्ट ऑफ योर कंटेंट. मान लो मतलब जैसे ह्यूमन का एक हार्ट होता है ना, हार्ट से सब शुरू होता है, हार्ट से खत्म होता है. दैट इज व्हाट स्टोरी टेलिंग इज फॉर कंटेंट राइटिंग. Wow. Okay. Well explained. So, why do थैंक you think that storytelling and content writing are very important, and why they matter for brands and businesses? सी द थिंग इज, इफ आई एम अ ब्रांड और मैं अपनी बातें किसी को ना बताऊं, तो वो कैसे जानेंगे मेरे बारे में? जैसे आप कोई नेटवर्किंग इवेंट पे जाओ, पहले चीज आप बोलते हो ना, हाय मेरा नाम है ये, मैं इधर काम करती हूँ, मैं ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मतलब स्टोरी बनाते हो अपने बारे में, राइट? तो दैट्स द सेम लॉजिक कि अगर आप कंटेंट में स्टोरी नहीं डालोगे, एक तो लोग पढ़ेंगे नहीं, बी वो लोग डिसंगेज हो जाएंगे, 3 आप यू वोंट लुक लाइक अ थॉट लीडर, 4 तो कोई कॉन्वर्सेशन करेगा ही नहीं आपसे. तो आपका ही लॉस है. मतलब आप मान लो, तो मतलब इतने आर्टिकल्स है गूगल पे, इतने बुक्स लिखे हुए हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर. एंड द बेस्ट पार्ट है, स्टोरी टेलिंग के लिए मैं भी आपको नहीं बोल सकती हूँ कि ये ही ठीक है. आप जैसे भी चाहो, मतलब थिंक ऑफ आवर फेमस मूवीज, जैसे हैरी पॉटर है, वो भी एक कहानी है. कभी खुशी कभी गम देख लो, वो भी एक कहानी है. और हर एक स्टोरी का जो स्टोरी लाइन होता है ना, जैसे कि यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ होता है, फिर वो होता है, वो हर एक मूवी का अलग होता है. तो आप अगर मूवीज को एनालाइज करो ना, द बेस्ट वे टू लर्न स्टोरी टेलिंग इज टू एनालाइज movies around you, or read books on. There's a theory part and then there's the execution part, right? Theory part पढ़ लो, it's good to learn the theory of storytelling. But if you actually want to learn कि stories कैसे बनते हैं, watch the story, watch a movie, any movie, and you'll just write down the bullet points, like this person did this, started from here. जैसे मतलब हैरी पॉटर का शुरुआत में है कि वो अपने आंट अंकल के पास रहते हैं, उनको छोटा कमरा दिया हुआ है, वो बच्चा बड़ा परेशान था, और फिर ये सब दैट इज द एंटायर स्टोरी दैट दे क्रिएटेड. सो इफ यू जस्ट राइट डाउन, मतलब डू इट एज एन एक्सरसाइज, राइट डाउन कि लाइक ये, एंड यू नोटिस कि यहाँ पे हाई पॉइंट है, यहाँ पे लो पॉइंट है, यहाँ पे कुछ
कुछ हुआ जिसकी वजह से हैरी पॉटर अब ये इधर हो गया है, so if you just write down those points, you'll see the concept is called a story arc basically, which is where do you begin and where do you end. So some stories start at the top, जैसे मतलब मान लो कोई जैसे रिच प्रिंस होता है और फिर वो मतलब मान लो कि कोई एक्सीडेंट में पड़ गया है तो वो लो पॉइंट होता है, फिर हाई पॉइंट होता है कि उसने चैरिटी शुरू कर लिया, राइट? सो दैट स्टोरी आर्क विल स्टार्ट from here, go down and go back up. तो ऐसे बहुत तरीके के story arcs, I think there are like 7 or 8, and if you understand them and watch movies with the intention to read and understand कि कैसे होते हैं, you'll actually become really good at storytelling. And with storytelling and content, the more you do, the better you'll get. There's no hack to it. It's not कि like आप एक दिन उठ के बोलो कि मैं स्टोरी टेलर बन गई हूँ, like ऐसे नहीं होता. You have to keep writing and iterating and reading and learning, and that's how you kind of get better at storytelling. Wow. Absolutely, because I have been also doing this for a long time now, because like Yeah. regularly I am posting. So initially my post used to be like कोई भी नहीं पढ़ता था एंड मैं खुद को मुझे भी नहीं अच्छा लगता था कि यार व्हाट एम आई राइटिंग, बट लाइक आफ्टर राइटिंग कीप ऑन राइटिंग आई गॉट कि लोगों को क्या पढ़ना अच्छा लगता है, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग. सो बेसिकली इट वर्कड वेल फॉर मी एंड ऑन लिंक्डइन एज वेल, जो आपने बोला. हाँ जैसे लिंक्डइन के पहले 3 लाइंस, मतलब दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सेइंग. That अगर is आपके पहले the 3 लाइंस में किसी ने सी मोड नहीं किया है, वो आगे पढ़ेंगे ही नहीं. right. चाहे आप 1000 वर्ड का लिखो, चाहे 5000 का, चाहे दो लाइन लिखो उसके बाद, पर अगर वो पहले जो 3 लाइन है, अगर उसमें आपने अटेंशन ग्रैब नहीं किया है तो कोई नहीं पढ़ेगा. सो एग्जैक्टली, वेरी मच कोरिलेशनल. यस. Yeah, because I related to what I was doing and what am I यस. doing. यस. वो यही हाँ होता है बिल्कुल एवरी पोस्ट, अगर कुछ एजुकेशनल पोस्ट भी अगर आप लिख रहे हैं ना, तो इट हैज टू बी इन समथिंग स्टोरी, मतलब मेक इट रिलेटेड टू योर रियल लाइफ और व्हाट यू हैव डन इन योर बिजनेस. एवरीथिंग इट वर्क्स. 100%. या. 100%. 100%. Correct. Okay, so what I think is previously content was very limited to articles and bloggings, but now content is shaped altogether to a very new form. So, what do you think that what is this new age content writing and how it is different from past? Yeah, so I think over time जो हुआ है, we've gotten the chance to explore different kinds of contents. जैसे मान लो मतलब 1 year ago reels तो कुछ होता ही नहीं था Instagram पे, और अभी 30 seconds में लोग पूरी ऐसे कहानी बताते हैं beginning to end. Like think of that, like we never had reels before. TikTok के पहले मतलब कुछ होता ही नहीं था 30-second format. अब फिर उसके बाद YouTube ने भी अडॉप्ट कर लिया YouTube शॉर्ट्स पे. जैसे पहले मान लो स्नैपचैट था, स्नैपचैट के बाद इंस्टाग्राम स्टोरीज हुआ, फिर लिंक्डइन स्टोरीज हुआ, फिर वो हटा दिया. So like all of these things, right, these are chances for brands and people to really get authentic with their audience. So feed post जो होता है, मतलब I think if you have to separate it, it's for awareness and to get people to your profile. but जो story का section होता है ना, या जो shorts होते हैं, या TikTok होता है, या reels होते हैं, that is just to kind of quickly grab somebody's attention and to engage your audience, right? So I think with newer forms of content, what is happening is people are pushing the creative boundary. वही होता है, like how do you convey a blog in 30 seconds, मतलब कैसे करोगे, मतलब क्या बोलोगे. जैसे मान लो किसी का इंटरव्यू है और आपको एक टीजर बनाना है, उसको रील में कैसे कन्वर्ट करोगे. So it really forces you to think in 30 seconds, infographic, blog, social media post, ये वो मैं कैसे मतलब एक piece of content को 10 बारी मैं मतलब split करूं. And that is the biggest challenge of content and content writing and content marketing today. कि आप एक piece of content को लेके, जैसे मान लो जैसे हमने ये इंटरव्यू किया है, आप इसको अभी रील बनाओगे, लिंक्डइन पे carousel बनाओगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे. So like how do you think in terms of where is your audience, how many different kinds of format can I put it in, and what will work best on what channel. That is the most important part. So matlab it's always challenging. And nowadays I've seen a lot of brands try and push the boundaries
बियॉन्ड जस्ट जो हमारे फोन पे होता है, नॉट जस्ट फेसबुक, जस्ट लिंक्डइन, जस्ट इंस्टाग्राम। वो लोग अभी टीवी एड्स कर रहे हैं, ये लोग मतलब बाहर के एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो क्रेड इज अ प्योर ऑनलाइन ऐप ऑन अ फोन। मतलब उनका तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब इट्स ऑल ऑन द फोन। अगर आप फोन पे हो तो एंड यू नीड टू हैव अ मिनिमम क्रेडिट स्कोर। बट मतलब उन्होंने इतनी अच्छी एड्स किए टीवी पे, वो एक माधुरी दीक्षित का था, एक इतने इतने सारे वो उसने उन्होंने 3-4 इतने अच्छे एड्स बनाए हैं। और सबके सब बात कर रहे थे क्रेड का एड, ये देखा तुमने, क्रेड का एड देखा है? फिर उन लोगों ने बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग किया जहाँ पे उन्होंने लिखा था डाउनलोड क्रेड। तो ऐसे मतलब ब्रांड्स आर जस्ट थिंकिंग कॉन्स्टेंटली, इज दैट कॉन्टेंट? यस. इज द टीवी एडवर्टोरियल कॉन्टेंट? यस. इज द सोशल मीडिया कॉन्टेंट? यस. is what Kunal Shah says on Twitter content? Yes. So matlab, you have to think so dynamically as a marketer. And the best thing is that there's no rule book. That's the best part about this entire thing. कि कोई रूल बुक नहीं है कि कोई आपको आके बोले कि आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे मान लो आपको अगर कोरा नहीं करना है तो कोरा मत करो, मत आंसर करो क्वेश्चंस। अगर आपको ट्विटर पे ट्रैक्शन आ रहा है तो ज्यादा ट्विटर करो। नोबडी विल से कि आपको 10 पोस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। सो कंटेंट एज अ होल रिलाइज अ लॉट ऑन क्रिएटिविटी. If you're creative, you'll be able to create good content which tells stories about your brand, about the things you want to talk about. And I think every day we're going to be challenged as marketers. पहले एक बार में होता था कि सब लोग पिंटरेस्ट पे जाते थे। अभी मतलब पिंटरेस्ट मोस्टली मैं तो जाती हूँ अपने रेसिपीज देखने के लिए, या कुछ हेयर कलर करवाना है, या कोई अजीब अजीब चीजें। मतलब पहले होता था कि सब पिंटरेस्ट के पीछे भागते थे, राइट? So as a marketer, you need to adjust to what is working in that field or what is working currently, and then how do you produce content quickly at scale so that you're able to grab everybody's attention. For example, iZigo, they do such a fun video kind of campaign. उनके जो छोटे छोटे वीडियो स्निपेट्स होते हैं, मतलब उनके पीछे इतना थॉट होता है। और वो लोग मतलब दे आर नॉट इनटू क्रिएटिंग वन वीडियो अ डे। कोई लोग कर सकते हैं, पर ये लोग बोलते हैं कि चलो हम एक हफ्ता लेंगे, एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, स्टोरी लाइन बनाएंगे, आईजीगो को मतलब स्लाइड मतलब धीरे से उनको स्लिपिंग कर देंगे कि आईजीगो कुछ 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 विदाउट मेकिंग इट ऑल अबाउट आईजीगो। तो मतलब उनका जो कंटेंट है इट्स वेरी वेरी क्रिएटिव एंड यू शुड डेफिनेटली गो लुक एट इट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कंटेंट. पीपल आर कंज्यूमिंग वीडियो, पीपल आर कंज्यूमिंग टेक्स्ट, पीपल आर कंज्यूमिंग stories, reels, जो भी है. So I mean, iZigo is one of those Indian brands who's doing it very very well. Wow. So the same thing is like कि what works for you, you have to do that. मतलब आप हर चीज में नहीं घुस सकते हो, but you should push your creativity side. Plus, you should try on things because this is what the new age content is. But also, what you have said, Yeah. right? That don't do that. कि अगर आपका Twitter चल रहा है तो do Twitter. Leave other things. That is also very right. Very well said. या एंड ऑल्सो मतलब एक और चीज होता है कि लोग ऐसे ब्रांड्स को देखते हैं, जैसे ये ब्रांड ने ये किया, ये ब्रांड ने ये किया है, हमें भी करना है, हम भी स्टार्टअप है। पर लोग समझते नहीं और सोचते नहीं है कि मतलब जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें 10 लोगों ने काम किया, 50-50 घंटे ईच। तो everything is not what looks on the screen to you and me might seem कि चलो ये इतना easy हुआ है, पर जो काम गया उसके पीछे, वो जो लोग कर रहे हैं उनको ही पता है कि कितना काम गया है। तो इट्स यू हैव टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर आप कंटेंट टीम बना रहे हो, एक पर्सन का काम नहीं हो सकता है कि सारे चैनल्स को मैनेज करे, सारे कंटेंट फॉर्म्स। यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि एक बंदा क्या ही कर सकता है। चलो मतलब मे बी 20 सोशल मीडिया पोस्ट कर सकता है, एक हफ्ते में 2-3 रील्स बना सकता है, यूट्यूब पे एक वीडियो डाल सकता है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। इफ यू हैव द मनी एंड द रिसोर्सेज एंड आर एबल टू हायर अ टीम ऑफ 10, 20, 30 people, then you go all out. मतलब you hire the best motion designer, you hire the best animation person, illustrator, जो भी है, and then you put together that team to create content at a scale that is sustainable. अगर आप छोटे कंपनी और आप एक बंदे को बोलो कि ये सारे मेरे चैनल्स और सारे पे कंटेंट डालो, वो नहीं हो सकता है. सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक एंड विद द न्यू कंटेंट, राइट? जैसे रील शुरू हुआ, एवरी ब्रांड वाज लाइक मेरे को रील्स करना है, मेरे को रील्स करना है. बट
बिना सोचे अगर आप करोगे ना, आपके ब्रांड को फर्क पड़ेगा। लाइक आप एक्चुअली व्हाट इज बेटर इज आप सोचो कि चलो ये आया है, अभी हाउ डू वी लेवरेज इट। थोड़ा सोच लो, एक हफ्ता सोचो, कुछ नहीं जाएगा, नथिंग विल गेट लॉस्ट। मतलब कल कुछ नया आ जाएगा, मतलब मान लो कुछ पता नहीं टिकटॉक के कंपेटिटर या कुछ आ जाएगा कल, कि चलो 30 सेकंड छोड़ो हम 15 सेकंड्स कर रहे हैं। डोंट जस्ट जंप इनटू इट बिकॉज इट्स न्यू। टेक अ वीक, टेक 2 वीक्स के लिए, अच्छा चलो हम हफ्ते में एक ये करेंगे, हम ये एक्सपर्ट को लाएंगे, हम ये बोलेंगे। थोड़ा सोच समझ के कर लो, एंड इट विल बी बेटर फॉर यू इन द लॉन्ग रन। So I think that's like one of the things that is really important for startup founders specifically to understand कि not everything can happen at the same time. So give it time and understand before you act. I think that is the bottom line. Lovely. Very well said, Vanshika. Thank you. So, coming again to content, how do you make a piece of content which satisfy your audience and you at the same time? Because it happens. It happens with me that sometimes you make something that you really like, but it doesn't satisfy the audience. So, how to write a good story or good content? What are your ideas or tips? Yeah, so I mean, when you're writing content, like even when I used to be into content heavily, the first thing I would do is go to Google and मतलब अजीब अजीब keywords डाल के उनको सर्च करके उनके blogs पढ़ो. So like for example, say if you want to learn how to put a screw in a wall, मतलब something as simple as that. आप type करो Google पे how to put a screw in a wall, what equipment do you need to do this, ये वो मतलब pick up those keywords and read how other people have written it, right? And then you can actually just never plagiarize, don't copy, but you can get ideas कि उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया है, उन्होंने पहले लिखा है कि ये चीजें चाहिए, फिर उन्होंने लिखा है कि ये टाइम इतना चाहिए आपको ये फ्रेम लगाने के लिए, फिर उन्होंने लिखा है कि अगर ये गलती हुआ फिर ये हुआ. So read the structure, read how they're doing it. The reason that Google is best is because it allows you to spy on your competitors for free, right? आप कोई पैसे नहीं दे रहे हो गूगल को, तो आप देख लो वो क्या कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या पॉइंटर्स लेके आ रहे हैं, और फिर आप समराइज करके सोच लो कि चलो हमारी ऑडियंस को, हमारा जैसे चलो हमारा ब्रांड है दोज ड्रिलर्स, राइट? तो हाउ डू वी फोकस मोर ऑन द इक्विपमेंट रादर देन आपका फोटो ऐसे लगेगा वॉल पे. हाउ डू वी से दैट अगर आप ड्रिल को ऐसे पकड़ोगे और ये वाला एक्सटेंशन डालोगे फिर ये होगा, पिक्चर में कैसे दिखा सकते हो. So basis your brand, you'll pick up that one part of the blog which is the heart of the blog. Agar the heart of the blog is good and well written and explains what you are doing as a company, then you've reached your goal of satisfying your company as well as your audience and yourself. So the thing is, yes, you have to write for your audience, but at the same time, you're not just writing because they want to read. You're writing because there is some other goal behind it, right? जैसे मान लो Miss Malini का blog was never supposed to be a business. She just started ऐसे ही मजे मजे में कि like let's start blogging about celebrities and ये वो, और अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है. Like go to Miss Malini today and look at where she started. Like she just got acquired by a Good Glam Group, which is a huge group. So like it's a process. Like if you just see where she started from, it was a passion and then it turned into this. Or look at any influencer, right? You pick Kusha Kapila, or you pick anyone like Komal Pandey or Siddharth Batra. Where they started out from, वो तो ऐसे मजाक में कर रहे थे, but then they figured out कि audience को ये पसंद है, ये पसंद है, and then they started building, और अभी वो तो millions में उनके followers हो गए हैं. तो like just see the journey that they've had. It's not कि one time में उन लोगों ने ये content बनाया और viral हो गया, because all this viral content is honestly just vanity metrics. अगर आपको viral content से like पैसे नहीं मिल रहे तो viral content का फायदा क्या है, right? So a lot of people get caught up कि मेरे को viral content बनाना है, but that is not what your audience like. Viral content means that you've created something good for your audience that they like. And that doesn't mean that you have to keep chasing that मेरे को viral content बनाना है. It's all like जैसे brand building होता है, it's one block, like second block, third block, जैसे Lego होता है. तो viral content doesn't happen like
3 months, 6 months, 9 months, it takes time to build that viral content, because viral jane ke liye, it means that you've found that your audience likes this particular kind of content, and you've executed that kind of content well. So it's a combination of everything put together, right? It's not just that virality thing jo hame chahiye. It's how did you write the content, what did you say, did they like it, are you looking at your previous metrics, what kind of content worked. So it's all about data plus a little bit of EQ, IQ put together, and that's how you really write good content for your audience and for your brand and for yourself. Wow. That's true actually, because what you can do is learn from what your competitors are doing and then you can incorporate, because all of a sudden you can get a idea कि हम मतलब एक experiment कर सकते हो आप, but एक level तक कर सकते हो. Ultimately, you have to Right, research, analysis, and then put it on. Correct. right, yes, absolutely. Okay, so I am a marketer, and content and marketing work all together in hand. So, what do you think that how does marketing play a role in content writing? So marketing and content writing do go hand in hand. Content again is execution bit of it, right? Marketing is again brand strategy, marketing strategy, then probably content strategy, right? Mhm. So content is how you get to your end user. Doesn't matter what form. Is it a reel? Is it a TikTok? Is it a YouTube video? Is it a long form blog? Whatever it is, it doesn't matter. But at the end of the day, you can't market without content. Every company today has to do some kind of content, unless you're like working with the government or something, and you're like, ha, government ka hai, matlab, kuch matlab. So like it depends, right? At what stage you are. If you're dealing with government of India, selling them like god knows what, like you will not need to do content, because that's a very like high level deal, right? Like government of India to aapke blogs nahi padhne wale hai. So like your audience is not us. So that kind, when you reach that sort of a business, then तो you're like, हाँ ठीक है, content is just एक अच्छा सा website बनाना है कि वो देखे कि हम legitimate हैं, office जगह होना चाहिए, बस. Like बाकी it's all relationships and how do you get that deal. But then when you move down the chain to like people who are in B2B, B2C, like even Apple does content, even though they know they're so great. Take any brand, you need to do content, because that is how you bring your consumers in. Like if you don't keep tapping that mind space of your consumer, कि मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, like that mental mind space, you have to keep knocking at it so that your consumer doesn't forget about you. Now how you do it, what you do, that marketing will tell you, but then content is responsible for executing on that idea. So like for example, some people have like a weekly email list कि हर Thursday को हम आपको ये summary भेजेंगे. Some people do it daily. There's a email list that I subscribe to called Morning Brew. They do daily updates. So like it's about the stock market, then what's happening in the industry, some marketing related stuff. So like they've got a newsletter of 4 5 different kinds of things, और वो हर दिन भेजते हैं. So like these are all ways to just keep your consumer in, like telling them कि we're here, we're here, we're here. Correct. And that's what you're basically getting at. Correct. So marketing is all about making people remind that you are existing somewhere, and you have to be present and on their screen every time. Like every 10 feeds, you should be there so that they Yeah, and it's also engage you. trust, right? It's also trust building, right? So for example, like best example, agar aap गाड़ी चला रहे हो and you're going down a highway and you see 10 Ferraris, you'll automatically think that Ferrari is a good car, right? Hmm. पैसे वैसे छोड़ो, I'm not saying think about the money or anything, Hmm. but because you see it so often, you'll be like, ये अच्छी गाड़ी हो सकती है, Huh. right? So that is how you build trust. Like think of it that way, right? Like you are just driving down a highway and you see 10 cars of the same kind, immediately that name will stick in your head. Correct. या तो if you don't even recognize the logo, you'll go ask somebody, you'll take a photo, you'll be like, ये कौन सा brand है, मैंने 10 देखे हैं इसके, ये अच्छा ही होगा. So that is how marketing works. It's like that recall, and the more you get seen, the more people will realize who you are, and you'll stay top of mind. So for example, like now when I think of laptop, I think of Apple. When I say chalo meko phone chahiye, I'm not an Android person, I will instantly think of an iPhone, right? So these are those mental connects that branding connects. Marketing helps you make those, that mind frame, like
Apple is supposed to be this premium brand that is, hyper productive, that, is seen in, XYZ kind of scenarios. Then they'll do all the marketing, which is how does our store look? How do our customer service people talk? What do our emails look like? What does our social media look like? And then the layer below that is all content in some shape or form. Absolutely. Very well said, Vanshika. Absolutely, you have Thank you. stated like everything which comes under branding, marketing, content writing, everything. All right. So Yeah, this would be thanks. my last question to you. Your one advice for the business who are trying to build their own brand. If I had to give them one advice, it would definitely be that you have to be patient. These brands are not built overnight, not 3 months, not 6 months. Like you're looking at like a 3 to 5 year trajectory, right? Like I said, we all get caught up in that metric कि हमें इतने likes मिले, हमने इतने shares किए, हमने इतने ये किए. But that is not really brand building. That is one step in the right direction. But brand building is a combination of everything that your consumer thinks, right? और एंड में जो असलियत दिखता है वो दिखता है आपके सर्विस पे और एनपीएस पे. अगर आपके सर्विस और एनपीएस, और जैसे आप कस्टमर को फोन करके बात करो कि हाउ डू यू लाइक आवर प्रोडक्ट, हाउ डू यू लाइक आवर कस्टमर सर्विस, डिड यू हैव एनी इश्यूज, that is all the bigger picture. So you need to give it time, and you will make mistakes, you will get criticized, you'll get trolled, you'll, when you do something good, you'll get into the good books. But you need to have time, you need to have budget, you need to have patience. Okay, like it's not instantly. Okay, like even sometimes people make mistakes, right? Like कि शायद हमने सोचा था कि चलो अगर हम मैक को नियॉन कलर में बना देंगे तो मतलब maybe kids will start using it. But that's a terrible idea. Maybe they executed it to see कि what happens, but eventually that is a terrible idea which probably will fail, right? So it's all about trying, experimenting, giving it time, and seeing what are the results. And the only way to actually assess if you're building a brand the right way is to either talk to your consumers or do a focus group and say that, hey, this is my product, this is what we do, this is how the brand is getting built. आपके क्या thoughts हैं इसमें? या तो you even go to pages like Quora and Reddit, because आज जो है ना, आज के customers वो डरते नहीं है जाके बताने के लिए कि हमें ये अच्छा नहीं लगा. जैसे मतलब couple of years ago there was this very funny incident where someone had tweeted, I think, about some airline in India only, and he tweeted saying, thanks for flying me to some place and my bags to somewhere else. और उनका जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, आई थिंक यू सीन दिस, उनका ऑटोमेटेड सिस्टम से थैंक्स फॉर चूजिंग आवर फ्लाइट या Oh, ऐसे कुछ, तो उनका इतना ट्रोल हुआ था. हाँ, yes, उस टाइम आई फॉरगॉट व्हिच ब्रांड इट वाज, बट yeah, it's like all these little things that happen, either with technology or with a human. And at the end of the day, that is what causes recall, right? If correct, someone has a really good experience with your brand, they'll post about it, right? Like if you go to websites like G2 or Trustpilot for specifically SaaS companies, yeah, people will go there and write, this product was really great, this product sucked. And at the end of the day, you have to keep reading, iterating, building, and being, the closer you are to your customer and the end user, the better you will build your brand. That's it. absolutely, absolutely correct. All right, Vanchika, thank you so much for being on the show. You shared some very insightful information about branding and content writing today. I'm sure our Thank you. viewers must be very clear about what does branding Yeah. content writing exactly stands for. So thank you so much for sharing your knowledge. I'm glad. I'm glad we could do this together. And yeah, if anyone wants to take this conversation forward, feel free to reach out on my LinkedIn. And yeah, I'd love to chat and, hear your thoughts on this entire session that you've watched. I would name this class as Master Class with Vanshika. Thank you. I have learned so much about branding and marketing. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for having me.